What prompted you to collaborate on this venture? Well, I can't claim any personal credit as British High Commissioner, but I think there is a British flavour to this. The British Council, my colleagues in the British Council here in Pakistan were instrumental, I think, in getting the Literature Festival off the ground 3 years ago. That's right. And have continued to play a fairly substantial role up until now. What we've felt at the time was that Pakistan, not just Karachi, needed a space for intellectual debate, for the celebration of writing, for the coming together of Pakistan with the international community. Right. And I think it is succeeding spectacularly well. It had about 5,000 participants in its first outing. Right. That roughly doubled last year. Last year, that's right. And now it is an event in its third year, already not to be missed, bringing a wide range of talent from across Pakistan and from across the world together, creating exactly that sort of intellectual and cultural space that clearly people find so exciting. And it's very stimulating. People have found it very stimulating, and I guess after British Council's involvement, probably that is when the British High Commission got encouraged. And yeah, but I'm here just as a participant, enjoying the event. Happily, I don't have to do much of the organising, and I think what is going to be really important for the festival in the years to come is that it shouldn't have to rely on organisations like my colleagues in the British Council or other foreign missions, and this needs to be an indigenous organic growth. It needs to have an organic growth. It needs to grow organically, as you say. Yeah, that's right. Exactly, and it will. Yeah, I mean, I've seen all three, and I see that it has grown. It has grown, and the variety of participants, that's very, very encouraging, because you see, you know, people from different classes of society coming and enjoying this, and the variety of the presentations, that has also grown. Yeah. The type of authors that are coming in, the kind of writings that the discussions are taking place on. So I find that very, very exciting. Yeah, and this is the first time I've been able to be here. One of the reasons I'm here is because my wife was here last year and said you mustn't miss it. All right. But you see instantly, as you say, there are a very diverse range of people here, and that's very encouraging. And the subject matter under debate is also very wide-ranging. I attended an event this morning on megacities, on women writing about women, about politics, and so on. It's everything you would want a literature festival to be, and it shows every sign of having the momentum to allow it to grow from strength to strength. And what is your opinion about the level of engagement between the audience and the presenters? Because you've attended these 3 sessions that you mentioned, and what kind of debate or discourse was taking place? Well, I think every session is different. Yes, of course, for each session. I think it's really quite thoughtful, actually. I think there have been some very good questions from the floor, very thoughtful answers delivered by panelists. So it's not just an event for the sake of it. I think there is a real dialogue taking place that so it's is not enriching. Just a see and be seen kind of an event. It's got substance. Yes, absolutely. And we've seen that substance, you know, really gain over the years. So if you say the missions may not be involved from the next time, do you think the event has arrived now? I think it's completely arrived. arrived. Totally. And this venue is clearly not going to be possible next year because it's bursting at the seams. It really is. But the venue tells you something, and this is not absolutely central Karachi, and yet literally thousands of people have taken the trouble and made the effort to get here for this event. There is real appetite for it. I wouldn't cast any aspirations on the location or of the venue, but
basically this It's is one it event works as which a venue, just, but it's going to need to be absolutely, bigger next year. much bigger. Yeah. This thing is growing, and it's really very, very encouraging. So thank you very much for being a supporter, for being a participant, and for giving us these views. Pleasure. Thank you so much. Pleasure. Thank you. I genuinely feel we should have more festivals like this. It's promoting literature, and I feel that we don't have enough cultural activities, and I think it's a wonderful effort that started 3 years ago. This is the third, and we should continue with it because it's a great opportunity for our younger generation. We are at the third Karachi Literature Festival, and I think this is a very important opportunity for struggling writers and people who want to start out in the writing field to meet people. मेरे साथ हैं अमीना सैयद, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और इस लिटरेचर फेस्टिवल की रूह रवां, और इसकी बुनियाद इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने रखी थी, इनकी कंपनी ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमीना हमें ज्वाइन करने का, और बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका, बहुत कामयाब फेस्टिवल आपका जारी है। जी शुक्रिया, हमें भी बहुत हौसला अफजाई हुई है, बहुत खुशी हो रही है, और हर साल ये बढ़ती जा रही है। और इस साल तो काफ़ी बैनुल अक़वामी मुसन्निफ़ आए हैं, हर साल आते हैं, लेकिन इस साल बहुत अमेरिका और बरतानिया से आए हैं, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, बांग्लादेश पहली दफ़ा बांग्लादेश से आए जी। तो इस तरह के हालात में जो हमारे यहाँ एक जनरल इम्प्रेशन है कि जी इतना बड़ा इवेंट नहीं कर सकते, इसमें ख़तरात बहुत हैं, हमारे यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने कदम ऐसा उठाया, और हर साल बतदरीज नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपने देखी है इसमें। जी जी, पहले साल किस तरह? जी पहले साल तो मेरे ख्याल में कुछ 4-5 हज़ार लोग थे। जी हाँ, वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी एक बड़ा ही इवेंट कहलाता है, जहाँ एक साथ आप 5-6 हज़ार लोगों को जमा कर लें। जी हाँ, बल्कि पहले ही साल ये कामयाब हो गया था, और बिल्कुल 5000 लोग थे। अगले साल जो 2011 में 10,000 हो गए थे। अब इस दफ़ा अभी हमने वो अपनी कैलकुलेशंस नहीं की है कि हमारा सिस्टम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले साल से कम दुगना यहाँ माशाल्लाह हो गया है। हालांकि हमने स्पेस भी बहुत बढ़ा दी है। अच्छा, इसमें आपने ऑडियंस जो है और जो आपके जो विजिटर्स हैं उनके लिए आपने, मैंने देखा है कि काफ़ी वैरायटी को बढ़ाया है, टॉपिक्स की भी, और जो यहाँ चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं जी, तो उसमें ये एक कॉन्शियस चीज़ आपकी तरफ से थी, या आपको खुद लोगों ने अब अप्रोच करना शुरू किया कि जी हम भी इसमें आना चाहते हैं, हम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं? मेरे ख्याल में हम नहीं, ये हमने खुद ही किया। जो हम 2-4 लोग हैं जो मिल के करते हैं। हम ये देखते हैं कौन सी किताबें छपी हैं उस साल, और कौन से मुसन्निफ़ का जिक्र आ रहा है, किसकी किताबें रिव्यू हो रही हैं, और कोशिश ये करते हैं हर साल के नए लोग आएँ, ताकि तब्दीली हो और ताकि सबको मौका मिले। क्योंकि इस साल हम पे बहुत प्रेशर पड़ा था लोगों का कि जो आना चाहते थे, हिस्सा लेना चाहते थे, हम भी यही चाहते हैं कि वो आएँ और हिस्सा लें, लेकिन हमारी भी ज़रा कैपेसिटी का वो है मसला। लेकिन वो रीडिंग कल्चर जैसे आप कह रही थी कि हमारे यहाँ काफ़ी कम हो चुका हुआ है, तो उसको एक इब्तदाई सतह से शुरू करने के लिए वाकई आपको बच्चों पे या स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा आपको जोर देना पड़ेगा। जी हाँ, उसके लिए को ख़ास आप कदम उठाएंगी? इस साल हमने इसीलिए एक पूरा स्टैंड सुबह से शाम तक दोनों दिन बच्चों के लिए रखा है, ताकि उनको दिलचस्पी हो किताबों में। कहानियाँ उनके लिए कहानियाँ हमने की हैं, सेशंस और पपेट शोज़ हैं, और एक है लाइव कार्टून प्रेजेंटेशन। तो पूरा इनके लिए हमने प्रोग्राम इसीलिए आज 2 दिन के लिए रखा है। अच्छा, इसमें आप ये तो आप उन छोटे बच्चों की बात कर रही हैं, लेकिन उससे बड़े लेवल पे जो बच्चे हैं, मैंने देखा है आपने यहाँ एक क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप भी करवाई हुई है। जी जी, तो उसमें किस तरीके से उस चीज़ को आप आगे लेके चलेंगी? जी हाँ, वो राइटिंग वर्कशॉप अभी मुझसे लोग कहे थे कि आपने एक ही करवाई, हम तो चाहते हैं कि कल फिर अटेंड करें। ये तो बहुत ही कामयाब हुई है राइटिंग वर्कशॉप, लेकिन असल में हमारे भी तो काफ़ी महदूद है हमारे वसाइल। हम ये 2 दिन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते। वर्कशॉप का मकसद ये था कि लोगों को एक समझिए पता चले कि ये और फिर वो उनको अंदाज़ा हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए राइटिंग वर्कशॉप का, दिलचस्पी पैदा हो, ताकि आइंदा वो कहीं और अटेंड करें और वो इसके लिए मौक़े ढूंढें। तो इसमें जिस तरह से आपके साथ कोलैबोरेशन पहले तो ब्रिटिश काउंसिल की थी, जी, अब इस दफ़ा आपके पास ब्रिटिश हाई कमीशन भी है, दूसरे इदारे भी हैं जी, तो आप समझती हैं कि इनकी कोलैबोरेशन से आप इसको मज़ीद और फैला सकेंगी और शायद ये जगह भी पूरी ना पड़े आपको? जी यकीनन हम फैलाएँगे, हमारा पूरा इरादा है। ब्रिटिश काउंसिल ने हमें बेहद सपोर्ट दी है, जिनकी वजह से ये समझिए इस मोड़ पे हम पहुँचे हैं। और इस साल US एम्बेसी ने भी हमें सपोर्ट दिया, पाकिस्तानी इदारों ने भी,
जैसे टपाल चाय ने हमें बहुत मदद की, इन्फाक फाउंडेशन है और नॉरस, तो काफ़ी हमें सपोर्ट मिली है इस साल। चले, और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में सपोर्ट आपके ये पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि वाकई जिन्होंने इसको कामयाब बनाया, आपने उनके लिए एक कोशिश की थी। जी हाँ, पार्टिसिपेंट्स हैं, मीडिया ने हमें इस कदर सपोर्ट दी है, और फिर जो लोग आए हैं जो अटेंड करने, असल में उनकी वजह से ये सब कामयाबी हुई है। Well, you know, I can only go by the response after my conversation with readers this morning. The number of women who came up to me and seemed so relieved that there was a woman from the subcontinent who was telling them that they don't have to be apologetic about being their age, and that in fact they can make the most of their 6th decade, and it can be a very productive and a very inspiring decade for even the next generation. मैं समझती हूँ कि लोग किताब पढ़ना बहुत हद तक भूल गए हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों में पढ़ने की आदत नहीं डालते। कंप्यूटर गेम्स आ गई हैं, वो कभी प्ले स्टेशन 2 पे बैठे होते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, आई डोंट थिंक दैट इज़ बैड फॉर किड्स, लेकिन जो किताब पढ़ने का टेस्ट डेवलप करना, आई थिंक दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। आई थिंक इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव festivals like this, because writing has been in Pakistan has been sort of like a suppressed field for a long time. Well, this is a festival which brings together a lot of cultures, and I think it's a very good move, and especially what really inspired me was Gogi groups, Gogi books. The women from the subcontinent suffer from exactly the same anxieties, the same aspirations, the same suppressions, and society is not particularly kind to them. So if you do buck the system, there's always some flack that goes with it, but I think it's time all of us at any age stood up to that and said, well, you know, it's time we made time also for ourselves and our own lives and our own goals. A country which is, you know, not the flavor of the world, for the right reasons, still has a voice and still finds time to create really outstanding culture. He was talking obviously about the popular writers which are coming out of Pakistan, but not just writers, music, art, etc., etc. So that's really fascinating. So this is extremely important to support that. बच्चों को इनकलकेट करना चाहिए, उनको गोद में बिठा के कहानियाँ पढ़ के सुनानी चाहिए, सिर्फ मूवीज़ या वो नहीं, बिकॉज़ आगे ज़िंदगी में ये ऐसे टूल्स हैं जो हम उनको देते हैं, आगे ज़िंदगी में बहुत काम आता है। बच्चे जिन लोगों को पढ़ते हैं उनके करीब देखकर, नई नस्ल ख़ास तौर पे जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो तो आ ही रहे हैं, सीनियर लोग, लेकिन उनके साथ उनके बच्चे भी आ रहे हैं। The authors are very well known, and everybody wants to meet these well known people. So this gives a chance to people to meet them and even to read their books and to understand their minds in a better way. I was in India recently. The Jaipur festival happened. I couldn't make it, so I knew I was going to be in Karachi, and I kind of made a mental note of it. So you know, I'm privileged to be here. It's fantastic. I think it's great that there's something like this happening. I'm sorry that the Kara Film Festival has sort of petered out. So fora like this are really good because it brings people together. You can see the other point of view. You can question. You can learn. You can express. So I think these are important. Yeah. My view is this, that it surprises me to see that in a country where education system is completely battered and shattered in smithereens, where there is no really culture as such which we can define, there are people writing and writing significant stuff. This is an amazing phenomenon.